Thank you very much, ladies and gentlemen, for welcoming the delegation from Ajman. We start the proceeding by welcoming the CEO, Mr. Rishi Somaya. Mr. Somaya. Already in the UAE, they have a company. So you can have a company without a visa. So that's going to cost you in the range of $1,100 to $1,200. So that's a very low cost setup. And again, the company will be set up within 30 minutes. These are the corporate benefits. I've gone through it, but I'll quickly run again. So you have 100%. I'll detail more about the free zone in the presentation that we'll see moving forward. So firstly, I'd like to talk a little about Ajman. Ajman is at a distance of about 25 to 30 minutes away from Dubai. What your business type or the constitution of the company is. FZC is a company more than one owner. That would be multiple owners. So anything more than one owner would be a FZC. BFC is a branch of a foreign company. So you can open a branch of your Indian company also in case you don't want to incorporate a new company. So it operates under the same umbrella. You can open a subsidiary, etc. And the last one is a branch of a local company. So a lot of people have companies in the UAE and they want to open another branch in the free zone for whatever taxation benefits, VAT benefits. So we incorporate all types of companies as far as their corporate structures grow. In terms of packages, again, we've created something called the all-inclusive package. Now, what it means is, as a company owner, today when you open a company in the UAE, usually you start your company, then you pay separately for the visa, then you pay separately for letters to go open a bank account. So you keep paying separately for everything. In our case, it's a package. What you pay us, let's assume you're talking about the company with zero visa, or let's say one visa company. The one visa company would cost you about $3,500, and that includes everything. It includes your license, your board resolution, certificate of incorporation, incumbency certificate, letter to the bank, lease agreement. It's a whole package. So you do not have to come back to us asking us for anything. And very importantly, we are the digital free zone. So all of these documents are QR coded. Now this works very well because again, if they are not QR coded, you need to go back to the authority to get a stamp, certified original documents, etc., which costs you money. But our documents, when they go to the banks or even internationally, when you touch in the QR code or you scan the QR code, it takes you to a secure government website where you can verify all the credentials. We have 3 licenses in our corporate set, so you can redact information that you don't want to give to parties if required. So one document only talks about the company and its activities. Second talks about the company activities and the manager. The third one talks about the ownership structure. So whatever you scan is the only information that's going to be visible to the respective parties who are showing to. Features. In addition to this, there are many other features like timeline, reaching us, execution of your processes. So we've had clients who even call us at 6, 7 in the evening and they're like, we urgently need to travel. Could you kindly execute our visa? And Nasser has been kind enough to even do it off working hours. So we are available 24/7 for our clients. I'm not saying this because I want to sell myself, this is a fact. Encompassing all kind of questions which you might have in your mind, which apparently must have got answered, but this is the time for you to open up. This is a Q&A session. Please identify yourself before asking a question. Mike will reach you and then you may ask your question. I'm IT advisor and startup advisor. We help in fundraise. So my question is that, my question is that you are president of companies to open a company today. So any sort of benefits or incentive to any specific industry like pharma industry? I have a question like they want to set up a medical device trading as well as manufacturing. Manufacturing we just answered, so they can start with trading. Like presentation. My name is Vinny. I run a consulting firm out of Dubai, 720 Transform, and a consulting firm here in India. Lived there for 20 years. Couple of questions here. Does your free zone offer any special? One needs a special setup for healthcare licenses. जो भी हुआ है उसकी वजह से, तो अगर आज आप शॉपिंग सेंटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे रशियन में भी बोर्ड्स लिखे हुए हैं, तो दे आर क्विकली अडैप्टिंग टू पीपल
जैसे अपने इंडियंस को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कहीं पे भी चले जाए दुबई में, आप किसी से भी उर्दू या हिंदी में बात करें आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जैसे रशियनों के लिए भी अब सुविधा कर दी है कि वो आए हैं, हर जगह रशियन बोर्ड्स लगे हुए हैं, मेट्रो में, शॉपिंग सेंटर्स में, तो आप किसी भी लैंग्वेज में देखिए, हमारी कंट्री में 180 नेशनैलिटीज़ लिव करती है। हमारे फ्री जोन के अंदर भी 192 नेशनैलिटीज़ है, सो ऑल आर वेलकम एंड ऑल लैंग्वेजेस वगैरह हर एक चीज़ वेलकम। हाँ, इसलिए मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर, और मुझे मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म लगा मुझे कि हाँ मैं अपनी बात यहाँ रख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे पूछी। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी क्लियर। Thank you. You have to get clearance from FTA. So it's not always related to free zone or to the authority to cancel your company. First of all, if you link it, you are doing professional activity like auditing as an example. So you have to get clearance from Ministry of Economic. You have to get clearance from FTA. You have to get clearance from different authority. Once you have this clearance, there is no issue for our process for closing. But unless you get this certificate or this clearance, we cannot close, because within one single license. So you can have a host of different businesses under one license instead of opening multiple companies, which is the case at the moment if you would go to other jurisdictions. इंडिया के लिए तो प्लान हमेशा ही है। इंडियन, जैसे हमने कहा कि आज ऑलमोस्ट 50, 60, 70 सालों से यूएई में ऑपरेट करते हैं, और सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस भी इंडिया से है। अभी भी जैसे मैंने कहा कि हमारे टोटल कंपनीज में से 40 से 45% इंडियन कंपनीज है, तो इंडियन तो बाय डिफ़ॉल्ट आते ही है, क्योंकि पहली चीज़ यूएई बिल्कुल इंडिया से नज़दीक है। जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जाते हो तो हमें 2-2.5 घंटे लग जाते हो, उतने टाइम में तो आप दुबई पहुँच जाते हो। फिर जो कल्चरल एलिमेंट है दुबई का, इज़ सिमिलर टू इंडिया। थर्ड, जैसे टैक्सेशन बिल्कुल कम है। जैसे अभी हमारे यहाँ 1 साल से 9% टैक्स शुरू हुआ है, पर 9% भी बहुत मिनिमलिस्टिक है। उसके ऊपर बाकी गवर्नमेंट की सुविधा है, जैसे आपको वीज़ा मिलता है, आप छोटी सी कंपनी खोलो आपको रेसिडेंसी परमिट मिल जाती है। अभी गोल्डन वीज़ास बने हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है। तो हमारे इंडियंस का बहुत इन्फ्लक्स स्ट्रॉन्ग है यूएई में, और ये चलते रहेगा मेरे ख्याल से नहीं, चल ही रहा है, चलेगा और चलते रहेगा। सर, किस तरह का रिस्पांस मिला है सर आज कार्यक्रम में आपको? और आज का जैसे मैं आज की नहीं बात करता, हम इंडिया लिटरली 22 साल से रोड शोज़ कर रहे हैं, तो हम जब भी इंडिया है हमें बहुत अच्छा इंडिया से रिस्पांस मिला है, और हमारी कंपनीज एक्सेलरेट हुई है, और हम हमारे इंडियन पार्टनर्स को बेशक बहुत हेल्प करेंगे। और हमारे यहाँ अभी ऑलमोस्ट 4 मिलियन इंडियंस रहते हैं यूएई में, जो टोटल पॉपुलेशन यूएई की 10 मिलियन की है, जिसमें से 4 मिलियन यानी बहुत बड़ी 40 लाख इंडियंस रहते हैं वहाँ पे। तो होपफुली ये बढ़ते ही रहेगा, और हम यहाँ इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? विश्वास के लिए तो हम जैसे कहा, हमारे ऑल पास 45% इंडियन कंपनीज है, तो वो तो विश्वास ही हो गया एक तरीके से कि इन्होंने आके सेटअप किया, हमको एम्ब्रेस किया, हम पे ट्रस्ट रखा, और इनको पॉजिटिव सर्विसेज मिली। प्लस यूएई के अंदर भी जैसे मैंने कहा 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है, तो इंडियंस आर गेटिंग वेरी गुड सर्विस, और ये चलते ही रहेगा इंडिया से जो बिज़नेस यूएई की और आ रहा है। और जैसे आज हमने कहा कि हमारे किसी क्लाइंट्स को फ्री जोन के अलावा कोई और फैसिलिटी या गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट चाहिए, तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे।